Okay, let us start with practice 6.1 trigonometry. Now here we are given us sine theta. This is question number 1. If sine theta, what is the value? Value of sine theta is 7 upon 25. We have to find cos theta and tan theta. Find cos theta and tan theta. We will start solution. We have to use trigonometrical identities. I am not using the triangle method. Since they are said trigonometry, use trigonometry method. Okay, and very simple and small also. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore cos square theta is 1 minus sin square theta. Therefore cos square theta will be, I just brought sin theta on right hand side. Sin theta goes on right hand side, becomes 1 minus sin square theta. This is 1 minus, what is sin theta? 7 upon 25 the whole square. Therefore cos square theta क्या होगा? 1 minus 49 upon 625. Therefore cos square theta will be, LCM निकालो, 625 minus 49 upon 625. Therefore cos square theta क्या होगा? 576 upon 625. LCM मालूम है ना कैसे लिखा? ये 1 upon 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया ये ऐसे 1 upon 1 minus 49 upon 625. So 25 1 into 625 is 625. Cross multiply करो, 625 into 1 625 minus 49. तो आता अपना 756 upon 25. Taking square root on both sides. So क्या आएगा ये? Cos theta will be square root of 576 upon 625. So cos theta कितना आता है? 24 upon 25. Now, what is tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta. ये trigonometrical ratios है. Therefore, sin theta अभी it is given to you 7 upon 25. और cos theta कितना है? 24 upon 25. तो ये क्या होगा? Therefore tan theta will be, sin कितना है? 7 upon 25 into, ये उसको ये उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 25 upon 24. 25 कैंसिल, ये 25 कैंसिल होगा, 7 upon 24. So we got both sin cos theta and tan theta मिल गया. One plus tan square theta. Identity बदले. Question 2. Question number 2. We have tan theta, they are given as 3 upon 4. Sec theta is
We will find sec theta and cos theta. Solution. Go for trigonometrical identities. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. And 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So go for the second one. Using trigonometric identity, 1 plus tan square theta equal to 1 plus 3 upon 4 the whole square equal to sec square theta. So we get 1 plus 9 upon 16 is sec square theta. So LCM है ये 16 1 is 16 across multiply. Taking this is therefore sec square theta is equal to 25 upon 16. Taking square root on both sides, therefore sec theta is 5 upon 4. Given cos, we know cos theta is 1 upon sec theta. This is 1 upon 5 upon 4. Therefore cos theta is 4 upon 5. Now we go to third question. Cot theta is given to you. If cot theta equal to how much? 40 upon 9. Find cosec and sine. 40 upon 9. Third identity, using third identity. Using trigonometric identity. What we have, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Therefore 1 plus 40 upon 9 the whole square equal to cosec square theta. So cosec square theta equal to, this is 1 plus 40 का square होगा 1600 and 81. Therefore cosec, ये cosec है भाई, cosec square theta. Therefore cosec square theta equal to LCM है ये 1 मतलब 1 upon 1. तो मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 81 और क्रॉस मल्टीप्लाई 81 प्लस 1600. सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट कोसेक थीटा equal to 41 upon 9. Square root of 1681 is 41. Now, sin theta is 1 upon cosec theta. This is 1 upon 41 divided by 9. Therefore, sin theta is 9 upon 48. We completed third question.
Let's go to the next question. That is fourth. उन्होंने दिया है Question 4. If phi sec theta minus 12 cosec theta equal to 0, find sec theta, cos theta, sin theta. जब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ना, कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, मतलब कोसेक को 1/sin एंड कॉस को सेक को 1/cos, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. सोल्यूशन सिंपल हो जाता है साइन और कॉस में. फाइव सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 गिवन. इसको इस साइड लेके आओ. Therefore 5 sec theta equal to 12 cosec theta. We know sec theta is 1/sin theta and cosec theta equal to 1/cos theta है और ये 1/sin theta. Put here, so we get 5 into 1/cos theta equal to 12 into 1/sin theta. अब ये हमको निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. Therefore 5 sin theta upon cos theta 12/5. मैंने क्या किया, sin theta इस साइड लेके आया, 5 brought it down. But what is sin theta upon cos theta? Tan theta. Tan theta is 12/5. मुझे sec चाहिए तो sec तो ये हो गया मेरा पहला सेकेंड आइडेंटिटी. यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, therefore 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Therefore 1 plus tan कितना है भाई, 12/5 square equal to sec square theta. So ये 1 plus 144/25 equal to sec square theta. सॉल्व करो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके. So we get sec square theta equal to 25 plus 144/25. Therefore sec square theta is 169/25. Taking square root on both sides, क्या मिलेगा आपको, sec theta equal to 13/5. cos चाहिए, but cos theta is what, 1/sec theta.
So this is 1 upon 13 upon 5. So cos theta will be, इसका ऊपर लेके जाओ, रेसिप्रोकल करो, 5 upon 13. Using now trigonometric identity. Sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Therefore, sin square theta equal to 1 minus 5 upon 13. 1 minus 25 is there. 169. 169 minus 25 upon 169. Therefore, sin square theta equal to 144 upon 169. Taking square root on both sides, sin theta is 12 upon 13. So we completed question number 4. Okay, let's start 6.1. Practice set 6.1, question number 5. Solution. Now they are given us tan theta equal to 1. So you have to find what is the value of theta. Tan theta equal to 1. This is given. But tan 45 equal to 1. Therefore, tan theta equal to tan 45. Therefore, considering only the angle, therefore theta equal to 45 degrees. Sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta equal to sin 45 plus cos 45 sec 45 plus cosec 45. Since theta equal to 45 degrees. Now what is the value of sin 45? Now you all know sin 45 is 1 upon root 2. अगर याद नहीं है, अगर समझो कभी ऐसा हो जाता है, भूल जाते हैं, ये तो कोई एक और एक देता रहता हूँ. I tell you one more other simple way of remembering, याद रखने के लिए. Suppose there is 45, 45, ये 90 है, तो याद रखो, consider this as 1, 1 root 2, और ये समझो इसको so you can use side opposite 45, sine opposite upon hypotenuse. So sine is opposite upon, यहाँ से we take this sine or this sine, it will be for sine 45, we take either way, it will be 1 upon root 2 only. ये भी 1 upon root 2, ये root 2,
cos reciprocal ना, hypotenuse opposite, and this will be root 2. इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका एलसीएम लो पहले, ये रूट 2 और ये 1 + 1 और ये 2 रूट 2. So this will be 2 upon root 2 upon 2 root 2. This will be 2 upon root 2 into this 1 upon 2 root 2. तो बचा 1 upon 2. So ये फाइनल आंसर इसका. This is the final answer. Sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta is 1 upon 2. This is the final answer. Now the question number 6. I have written all the 6 questions, 5 questions at least, here. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. So question number 6.1. We have to prove LHS equal to RHS. So ले लो sin square theta upon cos theta plus cos theta equal to sec theta. Now solution. We start with LHS. Start with LHS. Left hand side. Sin square theta upon cos theta plus cos theta. LCM लो, ये 1 है. So cos theta, cross multiply करो, ये होगा sin square theta plus cos square theta. This is nothing but 1 upon cos theta. ये क्यों? How you got 1 here? Because since sin square theta plus cos square theta equal to 1, the first trigonometrical identity. So this will be nothing but sec theta. Since sec theta is 1 upon cos theta. Therefore, sin square theta upon cos theta plus cos theta equal to sec theta. Prove. First part. First question number 6. First part we have proved. Now we go to the second question. Cos square theta into bracket 1 plus tan square theta equal to 1. So LHS, solution बहुत easy है ये. Cos square theta LHS तो पहले LHS left hand side ये है cos square theta equal to 1 plus tan square theta. आप लोग जानते हो 1 plus tan square theta is sec square theta. So cos square theta ये क्या होगा? This will be into sec square theta. Since 1 plus tan square theta is sec square theta, this will be cos square theta into 1 upon cos square theta. Since sec theta equal to 1 upon cos theta, square will become square. So this is equal to 1. Therefore, cos square theta into bracket 1 plus
tan square theta equal to 1, hence proved. We go to the third question. Second part prove कर दिया हमने. We go to third question. 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. रूट है, दिस इज इरेशनल, दिस इरेशनल, इस इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. तो हमने कॉन्जुगेट, शायद टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, विद ए कॉन्जुगेट. सो 1, ये इसका क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 प्लस साइन थीटा विद ए कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा which is 1 minus sin theta. So multiply and divide by 1 minus sin theta. पहले LHS लो, solution लो, left hand side 1 minus sin theta 1 plus sin theta. This will be what? 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. इसका जो कॉन्जुगेट है 1 plus sin theta का कॉन्जुगेट क्या है? 1 minus sin theta से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 minus sin theta अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ. इसको कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है. कॉन्जुगेट ले तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. इससे ही करो. कॉन्जुगेट लो. हाँ, ठीक, कॉन्जुगेट. क्या है So we took a conjugate 1 minus sin theta rationalizing के लिए, multiply and divide by 1 minus sin theta, which is the conjugate of this 1 plus sin theta. multiply करो. देखो रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है, देखो दोनों रूट है, तो रूट के अंदर ले लो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. ये है 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर रूट, तो वो रूट निकल जाएगा स्क्वायर और रूट, तो बचता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे देखो क्या है, a प्लस बी a माइनस बी. दिस a प्लस बी a माइनस बी, so it will be a square minus b square. a is 1, b is sin. So what you get? Root of 1 minus sin square theta. समझने की बात है, देखो वापस एक्सप्लेन करता हूं. नीचे है डिनोमिनेटर का a plus b a minus b is a square minus b square. Now if a is 1 b is sin theta, तो ये क्या होगा 1 plus sin theta into 1 minus sin theta
इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का मतलब 1, ये हो साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये इसका ये है आइडेंटिटी जो हमने 8-9 में सीखा था। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ a इज 1 एंड b इज साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी इज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर मतलब 1 ओनली एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर चला गया, ये तो एज इट इज कॉस थीटा। अब इसको स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसका भी हमें रीजन बताना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन हियर। यहां सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, यहां मैंने डाल दिया। और यहां बताना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan theta. So we completed the third question. अब fourth and fifth question बाकी। इसके बाद next 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ओनली थिंग इज लर्न प्रॉपरली आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो फॉर्मूले हैं, और प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और ये हो गया, यू आर एबल टू हैंडल इट। Question number 4. Sec theta minus cos theta cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. ये हमें बताना है। When you get such type of questions, I will tell you, I will suggest you go into sin and cos. और अगर ऐसा बहुत लंबा cot, tan से cosec आता, sin और cos में सबको कन्वर्ट करो। LHS sec theta minus cos theta into cot theta plus what is sec theta? 1 upon cos theta. ये cos theta. What is cot theta? Cos theta upon sin theta. What is tan theta? Sin theta upon cos. Okay. बाद में लिखेंगे इसका। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन लिख दो। cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसका एलसीएम लो, ये 1 है याद रखो। सो cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, वी गेट cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लो, ये आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट पार्ट याद रखो,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और सेम, और सिर्फ इतना ही लिखो, सीधा सिंपल एक ही लिखो तो भी चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी अप्लाई होता है, कॉस को उस साइड लेके जाओ तो बिकम साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये साइन थीटा चला गया और ये 2 यहाँ एक ही बचा। सो वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका, व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा। सो tan थीटा इंटू व्हाट इज कॉस थी 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा तो इट विल बी sec थीटा। Therefore this is equal to RHS. Therefore sec theta minus cos theta cot theta plus tan theta is equal to tan theta into completed. Now we go to question number 5. तो ये अपना 4th क्वेश्चन हो गया। Let us now understand how to remember the table. Okay, now when you go for exam and you suppose forget, you should not forget, but suppose, then you practice this, and if this type of question is asked, बहुत वेरी रेयरली, बहुत कम पूछेंगे, लेकिन फिर भी और वैल्यू देंगे, पूछा तो तैयार होना चाहिए। यू शुड नो दिस, बिकॉज हमने शायद ये 9th में किया था। तो देखो ये आपके डिग्रीज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, और ये रेशियोज हैं। तो ये है आपका पहला, ये ऊपर इसके ऊपर लिखने का 0 द नंबर ऑफ, अभी मैंगोज का सीजन है तो हम लोग मैंगोज लेते हैं, तो लेट्स कंसीडर दीज आर मैंगोज। तो पहले इसको कुछ नहीं, मैं 0 को कुछ नहीं मैंगो मिलेगा, इसको 1 मैंगो, इसको 2 मैंगो, इसको 3 मैंगो और इसको 4 मैंगो। 0 1 2 3 4 लिख दिया। यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिखें तो भी चलेगा।
0, 1, 2, 3, 4. 4 मैंगोज. 0, 1, 2, 3, 4. पहले को कुछ भी मैंगो नहीं, दूसरे को 1 मैंगो, सेकंड को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4. ये 4 मैंगोज, ये हर मैंगोज के देखो पहले में उसको कुछ दिया नहीं है तो छोड़ दो. दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दिस 1, 2, 3 and 4, दिस 4 मैंगोज है. इसको डिवाइड करना है आपको 4 हिस्सों में. हर एक ग्रुप में 4 लोग हैं तो इसको डिवाइड बाय 4 करो. मतलब ये 4 है तो इस 4 से डिवाइड करो और इसको स्क्वायर रूट करो. डिवाइड करने के बाद होता है को डिवाइड करो. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 इज 0. स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 याद रखो. Square root of 1/4 is 1/2. Sorry. Square root of 1/2 is 1/√2. Square root of √3/4 is √3/2. और square root of 1 is 1. इसको अभी घुमा और इसको यहां लिखो. पहले ये लास्ट नंबर फर्स्ट, यहां ये सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे. ये एज इट इज जहां है वही. दिस गोज हियर एंड दिस गोज लास्ट. क्या किया देखो, ये हमने यहां लिख दिए जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे नंबर्स. उसके बाद मैंने घुमा दिया. ये फर्स्ट वाला लास्ट पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, थर्ड वाला थर्ड पे, फोर्थ वाला सेकंड पे, लास्ट वाला फर्स्ट. नाउ वी हैव व्हाट टू डू इज now we have to tan is sine upon cos. 0/1 is 0. 1/2 divided by 3/2. 2 क्या है 1/3 आएगा. 1/√3 सॉरी, ये √3. √2 गया मतलब नीचे का डिनोमिनेटर. ये 2 गया, ये √3 और 1/0 is not defined. ये साइन देखो, साइन और ये कॉस, इसका रेसिप्रोकल 0/1. 0 मीन्स 0/1. 1/0 नॉट डिफाइंड. इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2√3, इसका रेसिप्रोकल 1, का रेसिप्रोकल 1 ही आता है. अब इसको जैसे ये किया था वैसे ये यहाँ 2√3 √2 नॉट डिफाइंड. और इसका रिवर्स वो यहाँ से नॉट डिफाइंड. √3 1 सॉरी √3 1 1/√3 0. This is what you should learn. Now we will question number 5. ये क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन है. क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा. cosec थीटा
ठीक, LHS cot theta plus I told you, whenever you come across like this, convert everything into sin and cos. सब sin and cos में convert कर दो, आसान पड़ेगा. So cot theta will be, it will be cos upon sin, and tan theta is sin upon cos. So ये आप जानते हो, cot is cos theta upon sin theta plus tan theta is sin theta upon cos theta. उसको लिखो, since cot theta is cos theta upon sin theta, tan theta is sin theta upon cos. एलसीएम निकालो, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब ये कॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. बट यू नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. तो ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. लिखना पड़ेगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equal to 1. So ये 1 upon sin theta is cosec theta and 1 upon cos theta is sec theta. यहाँ में लिखना पड़ेगा, since 1 upon sin theta is cosec theta and 1 upon cos theta is equal to sec theta. Therefore LHS equal to RLHS, hence proved है. Therefore cot theta plus tan theta equal to cosec theta sec question number be 6. 1 upon sec theta minus tan theta. 1 upon sec theta minus tan theta, और क्या है, इक्वल टू sec theta plus tan theta. Sec theta plus, कन्वर्ट साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो इसको भी. LHS सॉल्यूशन LHS, ये क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. देखो इसका रीजन क्या है, सिंस सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, tan theta is sin theta upon cos. नेक्स्ट वहां जाओ, कंटिन्यू करो इसको. ये देखो, ध्यान दो, इसका एलसीएम निकालो. ये ऊपर तो 1 ही रहता है, नीचे क्या होगा, कॉस थीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. ऊपर लेके जाओ तो ये आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा. सो LHS आता है आपका 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. हमें क्या चाहिए, सेक थीटा और कॉस थीटा. तो नीचे अपने को
कॉस चाहिए, कॉस चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अपने को प्लस साइन चाहिए नहीं है इसलिए, सो वी हैव 1 प्लस, सॉरी यह आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू यह आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई ऊपर का करोगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको स्प्लिट करो, यह आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा यहां गया, गड़बड़ 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 हो गया मुझसे। देखो ये दोनों में कॉस है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा से इतना और ये अपॉन कॉस थीटा, तो ये ऊपर सिर्फ कॉस थीटा आएगा, रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये आएगा आपका कॉस थीटा। तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा किया, तो अभी डिवाइड होगा, ये कॉस एक कॉस चला गया, विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सिंपली कॉस थीटा। तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज सेक थीटा प्लस tan theta. Therefore, LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. Therefore, ये 1 upon sec theta minus tan theta equal to sec theta plus tan theta. This question भाग लेंगे थे नहीं 5th and 6th. Now question 7. Sin 4 theta minus cos 4 theta equal to 1 minus 2 cos square theta. There is a minor printing error or typing error in a textbook. This is sin raised to 4 theta, not sec 4 theta, remember. In your textbook it is sec raised to 4 theta. Please make a changes. Okay, now let's start solution. Left hand side. We have sin raised to 4 theta minus cos 4 theta. This can be written as sin square theta the whole square minus cos square theta the whole square. This can be written as sin square theta plus cos square theta and sin square theta minus cos square theta. ये फॉर्मूला याद रखो,
a raised to 4 minus b raised to 4 is a square the whole square minus b square the whole square. We can a square plus b square into a square minus b square. ऐसा लिख सकते हो. So same thing I wrote. Now this is 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1 by identities, trigonometric identities याद रखें. Since sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो ये आएगा आपका sin square theta minus cos square theta. So yeah, what is sin square theta? 1 minus cos square theta minus cos square theta. So this is 1 minus 2 cos square theta. Since sin square theta is 1 minus cos square theta. Substitute करते हैं. This is RHS. Therefore, sin 4 theta minus cos 4 theta is 1 minus 2. 1 minus 2 cos square theta. Now we go to the question number 8. So question number 7 completed. Now go to question number 8. It is sec theta plus tan theta equal to cos theta upon 1 minus sin theta. Solution. LHS is sec theta plus tan theta. देखो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में सेक और टैन है, और राइट हैंड साइड में साइन एंड कॉस में है सब वैल्यूज. सो कन्वर्ट यहाँ साइन एंड कॉस में सब वैल्यूज. कॉस सेक इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन इज व्हाट, सॉरी tan थीटा इज व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये लिखना पड़ेगा. सिंस सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा and tan theta is sin theta upon cos theta. LCM देखो cos theta है, same denominator same, so 1 plus sin theta. अब हमें क्या चाहिए? 1 minus sin theta नीचे चाहिए, so multiply and divide by 1 minus sin theta. So 1 plus sin theta upon cos theta into 1 minus sin theta upon 1 minus sin theta. तो ये क्या होगा? 1 minus sin square theta upon cos theta into 1 minus sin theta. तो ये होगा 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. Cos square theta upon cos theta into 1 minus sin theta. तो ये cos और एक cos चला गया. So we'll cos theta upon 1 minus sin theta. This is your RHS. Therefore, sec theta plus tan theta equal to cos theta upon 1 minus sin theta. So, question number 8 completed. Very simple questions. Now we go to question number 9. If tan theta plus
1 upon tan theta is equal to 2. Then show 1 upon, then show tan square theta plus 1 upon tan square theta is also equal to 2. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन. इसको LHS नहीं ले सकते because this is a very complete different term. We start with this. Tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2. This is given. Squaring both sides. हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? बिकॉज ये tan square theta plus 1 upon tan square theta स्क्वायर करें बगैर हमें नहीं कर. Without squaring we won't able to proceed. So squaring both sides. So we get tan theta plus 1 upon tan theta the whole square equal to 2 the whole square. So a plus b the whole square expand करो, we get tan square theta plus 2 into ab. So tan theta into 1 upon tan theta plus b square. So it is 1 upon tan square theta is equal to 4. देखो a square plus 2 into ab plus b square. So this gets cancelled out. So what you get here is therefore tan square theta plus 1 upon tan square theta equal to 4 minus 2. 2 goes on left right hand side. Side changes, sign changes. Therefore tan square theta plus 1 upon tan square theta equal to 2. Hence proof. सॉल्व हो गया. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. Now we are going to go and solve 10th question of 6.2. They are given us this. This is the 10th question. Let's start. Solution. Write LHS left hand side. It is what? Tan A upon 1 plus tan square A the whole square plus cot A upon 1 plus cot square A the whole square. Now we know the trigonometrical identities. What are they? 1 plus tan square A is tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. This we are going to use here. So this will be tan A upon 1 plus tan square A will be sec square A the whole square. Don't forget the square term outside. Cot A upon, this will be 1 plus cot square A is nothing but cosec square A whole square. This is nothing but tan A upon sec square A into square. It will be sec 4A plus cot A upon cosec raised to 4A. Now convert this into sine and cos. You know tan A equal to sine A upon cos A. Then cot A is cos A upon sine A. Sec A is 1 upon cos, and cosec A is 1 upon sine A. These are what we are going to use here. So this will be sine A upon cos A
अपॉन 1 अपॉन cos raised to 4a प्लस cos a अपॉन sin a अपॉन 1 अपॉन sin raised to 4a। इसको आप स्प्लिट कैसे करोगे? दिस विल बी sin a अपॉन cos a। देखो ये है आपका sin a अपॉन cos a, लिख गया, इनटू ये 1 अपॉन cos रेज टू 4a ऐसे फॉर्मूला करो। सो इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड करता हूं, 4a को cos रेज टू 4a को cos a इंटू cos क्यूब a। देखो cos रेज टू 4a कैन बी रिटन एज cos a इंटू cos रेज टू 4a प्लस इसको भी वैसे ही करूंगा cos a अपॉन sin a, और इसको sin रेज टू 4a को दो हिस्से में डिवाइड करो, sin a इंटू sin क्यूब a। अब ये क्यों किया था? क्योंकि ये cos a चला जाता है, sin a चला जाता है। सो व्हाट विल बी लेफ्ट? sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू sin क्यूब a। अब इसमें से sin और cos बाहर निकालो, कॉमन है, sin a यहाँ भी है, sin a यहाँ भी है, cos a यहाँ भी है और cos a यहाँ भी है, तो बचता अंदर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। बट यू नो वेरी वेल ये sin a इंटू cos a, दिस इज नथिंग बट 1, since sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 10 हो चुका है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 11। sec raised to 4a into bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a equal to 1। ये फॉर्मूला याद रखो, ये सेम वे, ये 1 माइनस बी रेज टू 4 होगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। सेम वे यहाँ हमें करना है, LHS लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो ये होगा आपका sec 4a 1 माइनस sin रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। सो ये होगा sec रेज टू 4a, इसको हमें स्प्लिट करना है इन दिस 1 माइनस sin स्क्वायर a into 1 plus sin square a minus 2 tan square a। तो याद रखो व्हाट इज 1 माइनस sin square a, cos square a, तो ये होगा आपका sec रेज टू 4a into cos square a into 1 plus sin square a minus 2 tan square a। यहाँ लिखना पड़ेगा 1 minus, in short, sin square theta plus cos square theta equal to 1।
तो सेट जाएगा तो जो चाहिए वो मिलेगा आपको। मतलब इस तरह गया तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए के बदले मैंने कॉस लिख दिया। अब कन्वर्ट साइन और कॉस में ये आएगा आपका 1 अपॉन, मैं कॉस रेज टू 4 को 2 हिस्से में कन्वर्ट करता हूं ताकि कैंसलेशन को आसान पड़ेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसका रीजन है sec theta is 1 upon cos theta and tan theta is sin theta upon cos theta। तो ये चला गया, बचा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो डिनोमिनेटर देखो सेम है तो लिखो कॉस स्क्वायर ए, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट ये 1 प्लस एज इट इज लिखो, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। सो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर विल बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे आया, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। therefore sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a equal to 1। ये आपका 11th क्वेश्चन। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये हमें प्रूव करना। नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो हमने प्रूव भी किया है और हमने पहले के क्वेश्चंस पे यूज भी किया है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 1 उस साइड लेके जाओ। सो tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, सो माइनस 1। ये tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा 2 है ना, तो उसको अलग अलग करो, tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू, ये देखो ये क्या है a स्क्वायर माइनस 1। सो वी कैन 1 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो इट विल बी a माइनस 1 a प्लस 1। तो ये आएगा sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। अब ये sec थीटा माइनस 1 नीचे लेके आओ और ये एक tan थीटा उस साइड लेके जाओ नीचे। सो हमें क्या मिलता है देखो, वी गेट therefore we get tan theta upon sec theta minus 1 equal to sec theta plus 1 upon tan theta। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हमने 9th में किया था। सपोज a upon b is equal to m upon n equal to x upon y समझो। So this can be written as amx upon b plus n plus 1। All is key, all ratios equal। ये था थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। सो हम इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। सो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 एज इट इज, ये sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा, और इसको दोनों को रेशियो को ऐड करो, वी गेट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। thus we get the needed ratio। ये और इक्वेट करो, दे आर इक्वेट।